Assalamu alaikum. Welcome to Learner Academy by B. Abloch. Myself Nara Rajput. Today is our ninth lecture in cross cultural psychology. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कल्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कल्चर एंड डेवलपमेंट के उसमें हमने बात करनी है। सबसे पहले है कि जो कल्चर की डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रही है। कल्चर की जो डेवलपमेंट पे अगर हम बात कर लें तो क्या है कि हम अपने कल्चर को खुद ही के पीछे के इंसान नहीं है जो अपने थ्रू एक्ट मतलब अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए अपने जो उनसे अपने कल्चर को आगे लेकर जा सकता है। ठीक है, बनाते हैं मतलब कि उस पर फोकस करते हैं कि उनका कल्चर क्या और वो किस तरह से रहते हैं या किस तरह से रह। उसके बाद यहाँ पे द conception have received considerable attention through different domains of psychology during the last 2 decades. Beside serving a description different in personality and social categories, individual को तो independent होना, अकेले होना। ठीक है, with this they respect value system, the culture communities construct and co-construct as the shared realities in specific domain of life that are transmit are noted between generation, yet they also represent individual psychologies which affect perception, motivation, affect regulation and social behavior in characteristic way. We propose to conceive to earliest interactional situation between infants and their locus for the first purpose, differentiating the emerging soul according to culture standard. A component model of parenting based in evidence, we promote the view the first development result in relationship formation is achieved much earlier attachment theory purposes. ठीक है, उसमें जो अटैचमेंट थ्योरी जो थी वो प्रपोज कर ली गई। कल्चर एंड adolescent development क्या है ये in 1960 G. Stanley Hall, the father of adolescent research, published Adolescence. The book marks the beginning of systematic exploration with empirically and theoretically of adolescent and unique period of lifespan. During the 8 decades following the publication research, adolescence has gradually attracted more attention from researchers from various disciplines such as psychology, sociology, and medicine. Grant Adams, a prominent adolescent researcher, remarked by the end of the 1990s, the study of adolescent come of age. In this chapter, we summarize some of the most significant issues, research finding, and the area of culture and adolescent development. First of all, we will briefly mention two classic but enduring debates on the University of Adolescent and adolescent syndrome and stress. They will summarize the major findings on the role of culture, the three areas of adolescent development: physical, cognitive, and socio-emotional development. Finally, we briefly outline the two emerging issues in cross-culture adolescent research, universally in development cross and the effect of social and globalization.
फिजिकल डेवलपमेंट कैसे, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट चेंज इन एडोलसेंट puberty. Although puberty appears to be biological phenomena that is hardwired in the human body, systematic research has shown clear evidence to culture effect of the puberty. One of the clearest markers of development girls in मतलब कि जो सी है द टाइम द गर्ल बिगन दी मेचुरेशन साइकिल 11th एंड टेंडर इसके एज में, ठीक है. रिव्यू द सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट वर्ल्ड वाइड फाउंड द टाइमिंग ऑफ वेरीज ग्रेटली अक्रॉस कल्चर. Of the most 150 group of people studied, the mean age of marching range 112.2 years मिडिल क्लास, मतलब ये जो एज होती है, और अडोल्सन की जो एज है वो 18 ईयर्स को जो था वो कहा गया है, ठीक है. कोग्निटिव डेवलपमेंट वन ऑफ द इंक्लूडिंग टॉपिक क्रॉस कल्चर रिसर्च इन कोग्निशन. क्रॉस कल्चर रिसर्च इज अ डोमेन कवर रेंज ऑफ सब्जेक्टिव मैटर, अर्ली वर्क, visual illusion and the following four areas of research: Piaget theory of development study, Colbert theory of normal reasoning study intelligence and academic achievement. Piaget stage theory of cognitive development suggested that adolescents develop from concentrate operation to formal operation. The stage of concentrate operation occurs from 7 to 11 years and is characterized by abilities to try to reason logically about concentrate events. Today's our lecture is end. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे. इसके अंदर सिर्फ हमने जो थी बात करनी थी डेवलपमेंट के बारे में ही बात करनी थी, ठीक है, जिसमें एडोलसन को भी हमने शामिल किया था.